सो गाइस आज हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले अलग करके फिर रीअसेंबल करेंगे इसको। सो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इसका जो ये है हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे अंदर का। उसके लिए हमें चाहिए ठीक ये लेना है, एक बार और दिखाएंगे हम आपको। ये ऐसे लेना है, इसे एक छोटा पीस लेना है और एक इधर से छोटा पीस लेना है। ये ऐसा जुड़ जाएगा। फिर आपको इसको सेंटर में इसमें ऐसे फिट कर देना। अगर नहीं जाए तो उसको आप नहीं लगता है तो छोटे पीस को इस तरह से आप लगा सकते हैं। ये आप चेक कर लीजिएगा। फिर एक बड़ा पीस लेंगे, इसको बीच में लगाएंगे, फिर एक छोटा पीस इधर से इंसर्ट करेंगे, फिर एक छोटा पीस ये ऐसा रिंग बनता चला जाएगा। ऐसे ही हम इस साइड से भी करेंगे। इधर लगाते वक्त और सिंपल है, हम ऐसे करेंगे। फिर इसकी हेल्प लेते हुए हम आप देख सकते हैं ये लग रहा है। वैसे ही अब इधर भी हम एक बड़ा पीस लेंगे, साथ में छोटे पीस को इंसर्ट करेंगे ऐसे, और फिर यहाँ से एक छोटे पीस को इंसर्ट करेंगे। बहुत केयरफुली करना होता है। इधर का भी हो गया। ऐसे ये आपका रेडियो का एक साइड और बचा है। इधर भी हम ऐसे ही इसको पहले इसको आप मेक श्योर रखिएगा कि ये टूटे ना वापस, नीचे का जो आपने बना लिया, और फिर उसमें आप ये लेंगे। अगेन इस तरह से आप 3 पीस ऐड करेंगे और इसको आप यहाँ से ऐसे घुसा देंगे। फिर सेम प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे।
कुछ ऐसा तैयार हो गया। ऐसे ही चारों तरफ से हमें लगाने होंगे। ये ऐसा का आपका स्ट्रक्चर यहाँ से ये आप देख सकते हैं। इधर भी हमें बद लगाना है। सेम वे से पहले हम इसको नीचे ऐसे रखेंगे, फिर उसी में इसे इंसर्ट करेंगे और फिर सेम वे इसे रखेंगे, इसे इंसर्ट करेंगे और फिर से हम इसे लगाएंगे। ये ऐसे हमारा बॉल जैसा स्ट्रक्चर रेडी हो गया। अब लेंगे हम कोई भी एक पीस लेंगे, जैसे हमने ये लगा दिया। सो अब हम ब्लू ऑरेंज जैसे आप ये देख सकते हैं, ये ब्लू हमने ये पीस लिया, इसमें ऐसा अटैच करना है ये ब्लू ऑरेंज एंड ब्लू एंड वाइट। सी ऐसा आपका स्ट्रक्चर रेडी होगा। सो हमें इसे इंसर्ट करना है कुछ इसमें इस तरह से। ये हमने किया, ये ऐसे इंसर्ट किया। यहाँ पे एक क्लू हमें ये छोटा ब्लॉक्स आप देख सकते हो, ये वाला ये ऐसा होना चाहिए। ये जो साइड है दिस शुड बी एट सेंटर, दिस साइड शुड बी एट सेंटर। सो इसको हम ऐसे इंसर्ट करते हैं। नाउ ये 4 पीस तो हमारा हो चुका है। Now we need a yellow orange. So from here, this is the yellow orange. This should be like. Now we have one more yellow orange. This one. Yeah, this fits here. Now in center part you should be having small piece like this, and you have to like this. Okay, in here we have center part white. So white, this should be like
This should be in center. Yeah. One corner is completed. This one corner. We should tight it like this from here. That's done. Now here we will put some white and blue. This is containing white and blue, so this will be like this. Blue facing this, white facing this, red will be the new color. So now we have blue and white. This will be holding like this, white and red. Now another white and red. We will be having two white and red. We have to check. Okay, now white part. Here comes the white completed. Now we will put like this, and we need a red and blue. Where is red and blue? Like this. Same part. We have to check this. If we will put this, this is different. We have to see this. This one is similar, so we will put like this. Yes, and put here over here. Make sure the structure doesn't break. कोशिश ये रखिएगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका टूटे ना. Now fourth part. Here we have completed. Now fourth part is this one. Yeah. We have completed 1/4 of the Rubik's cube. Similarly, we will do that here also. White and red. We have white and red in this. White and red. White and red. Okay, we have to see that. Yep, it matches white, it matches red. Now we have to put one white and red over here. Like this. Here white and green. First we will put this white. Center part. This should be a center. Okay, this is our center. In center we will use this smaller pieces. Now white and green. So we have to check this one and this one. We have two types of white and green. So we will check. We have to see this white and green. So this is matches us. So here we put white and green. Now our next comes the red and green. Sorry, be careful. Now white and green with this, not this form. We have to check like this. This one suits here. This one suits here. So we will be putting this over here. Now centerpiece. Yes. Now green centerpiece. We will tight this whole thing. Now we have to see green, orange and red. This one.
green green, white white, orange orange, green and orange. It's not the correct one. This one is correct. Okay. Now green and white. See this combination, this green and white, we have to find same. Green and white, we will put like this. White and orange. This one is white and orange. Now we will put last our white part, this one. Like this, our white is completed. Here we put our green one, seeing center. Yes. Now orange one. See this center part, this one is center part, and we have to put it here. When you will solve, you will get to know which part will fit where. Now we have orange green and third color we don't know. Let's see, orange green, is there anything? Yes, orange and green. So we have to see this, check this, same, we will fit it will fit here. Now orange and green, same. Center part orange, center part green. Now orange green yellow, orange yellow, green yellow, sorry, green yellow. It's not fit here, it will be here. Yes, it's the correct one. Now orange yellow, orange yellow, this one will fit like this. Okay, this here will come yellow, center part. Yes, it's completed. Do same, orange yellow blue, yellow blue, this one is yellow blue, same like this. Center part orange, yes, center part blue, yes. Here we will put orange yellow. We have only one piece left, orange yellow. It will be like fit like this. Yes. And here comes the blue yellow. Blue yellow. Can you see the blue yellow? Yes. We have two blue yellows. It will not seem as like this. It is the same. So we will make this. Now we need a yellow one, having facing this center. Yes, completed. So half, 1/3/4 of our cube is completed. Now last, this segment, green facing green, red facing red, yellow facing yellow. This one is like, first of all, green and red. We get this one, green, red. Now center part green, now green and yellow,
part red. Yes. Now center part yellow. Matching this yellow and red. This yellow and red. Now yellow center. The most difficult part comes over here, last corner. We have to be careful at this corner because we have to check again and again the space between them. Now we will put this first. Blue yellow, center of the blue, center of the blue, center of the red, blue yellow, center of the red and yellow. Now this comes the trickiest part. We have to be like little careful while make space in between them because that white structure slides inside. Yes, we have completed our Rubik's Cube. So do like, share and subscribe.